Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Dear friends, this is Bashir Ahmad and you are watching my daily dose. Dear friends, आज की इस डेली डोज में हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मदरबोर्ड के एक और अहम कंपोनेंट एक्सपेंशन स्लॉट के बारे में सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, मोडेम कार्ड कैसे और कहाँ लगते हैं? यकीनन आपको पता होगा, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में कुछ खास ओपनिंग टाइप कनेक्टर होते हैं जिन्हें एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर मुख्तलिफ स्लॉट जिनमें पीसीआई, एजीपी और पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट शामिल है नजर आ रहे हैं। इन तमाम को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक्सपेंशन स्लॉट को देखते हैं कि एक्सपेंशन स्लॉट क्या है। एक्सपेंशन स्लॉट्स। एक्सपेंशन स्लॉट और ओपनिंग्स or sockets on the motherboard where circuit boards or expansion cards can be inserted to add new feature to the computer or to improve computer performance, or it may increase functionality of computer. The cards which we can insert into expansion slots include graphic cards, sound card, network interface card. Dear friend, expansion slots support upgradation of computer system. It means that expansion slots are used to upgrade computer system. Dear student, एक्सपेंशन कार्ड मदरबोर्ड के ऊपर एक लंबा सा कनेक्टर होता है जिसमें हम मुख्तलिफ कॉर्ड्स लगाकर कंप्यूटर की सलाहियत को बढ़ा सकते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट की मदद से हम पूरा सिस्टम तब्दील किए बगैर कंप्यूटर की सलाहियतों में इजाफा कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर को अपग्रेड कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, कंप्यूटर मदरबोर्ड पर मुख्तलिफ स्लॉट होते हैं जिसको हम एक्सपेंशन स्लॉट्स कहते हैं। इन एक्सपेंशन स्लॉट में हम एक्सपेंशन कार्ड्स को इंस्टॉल करते हैं। हम एक्सपेंशन स्लॉट को कब इस्तेमाल में लाते हैं? इसका जवाब ये है कि हम एक्सपेंशन स्लॉट कंप्यूटर में 3 वजूहात के बिना पर इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट, कि जब हम कंप्यूटर में न्यू फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर टीवी कार्ड लगाने से कंप्यूटर से टीवी का काम लिया जा सकता है, यानी कंप्यूटर में टीवी कार्ड लगाकर कंप्यूटर टीवी बन जाता है। सेकंड, अगर कंप्यूटर में कोई फीचर भरपूर तरीके से काम नहीं करता तो हम बेहतरी के लिए एक्सपेंशन कार्ड को यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर ग्राफिक्स कार्ड को हम ग्राफिक बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। थर्ड, अगर कंप्यूटर में कोई फंक्शनैलिटी खराब हो जाए, मिसाल के तौर पर वीजीए में या वीजीए के पोर्ट में खराबी आ जाए, तो इसको हम वीजीए कार्ड लगाने से रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम इसकी तशरीह एक लाइन में करना चाहें तो सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए एक्सपेंशन स्लॉट से फायदा उठाया जा सकता है। There are 3 common types of expansion slot: PCI, AGP and PCI Express. Now we will discuss PCI, AGP and PCI Express in detail. PCI slots. PCI stand for Peripheral Component Interconnect.
स्क्रीन पर आप PCI स्लॉट देख सकते हैं। PCI slot is a type of expansion slot on motherboard for adding new hardware devices to computer. For example, some common PCI cards include network interface card, sound card, modem card, and external port cards. TV cards can be inserted in PCI slot. PCI slot is an older technology but still used somewhere. PCI slot is replaced by PCI Express. Dear student, PCI slot को भी 1993 में इंटेल वालों ने मुतारिफ करवाया, जो कि साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड, मोडेम कार्ड या एक्स्ट्रा पोर्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। AGP से इसकी स्पीड कम है और इसका इस्तेमाल खत्म हो चुका है। इसका स्पीड 133 MB तक है। AGP slot. AGP stands for Accelerated Graphic Port. स्क्रीन पर आप AGP slot देख सकते हैं। AGP slot is a type of expansion slot. AGP slot is specially used for graphics card. AGP slots provide high-speed point-to-point channel between graphics card and CPU or memory. AGP slot used for 3D graphics, AGP slot used for gaming, AGP slot used for video rendering. AGP slot provide dedicated pathway between graphics card and the processor. Therefore, AGP slot faster than PCI slot because PCI slot share the bandwidth. Dear friends, AGP slot को 1997 में इंटेल वालों ने मुतारिफ करवाया। AGP को खास तौर पर ग्राफिक्स कार्ड्स के लिए बनाया गया है ताकि CPU और GPU के दरमियान डेटा तेजी से मुंतकिल हो। GPU मीन ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तकरीबन AGP का इस्तेमाल भी खत्म हो चुका है। इसका स्पीड 2 GB तक है, जो कि PCI से ज्यादा है। PCIe stands for Peripheral Component Interconnect Express, यानी PCI Express। स्क्रीन पर आप PCI Express स्लॉट देख सकते हैं। PCI Express slot is a new version and faster version of both PCI and AGP. PCI Express slot was developed in 2004. PCI Express slot developed by Intel, Dell, IBM and HP. PCI Express slot used to connect graphic cards as well as SSDs, network interface card, TV tuner card. PCI Express slot is also used point-to-point channel, mean dedicated channel. PCI Express slot
have higher speed as compared to PCI and AGP. PCI Express has some advantages over PCI and AGP. PCI Express has maximum system bus throughput. PCI Express has good error detection and reporting mechanism. PCI Express has hard plugging. PCI Express slot also support latest sound card, TV tuner card and wire card. Dear friends, PCI एक्सप्रेस स्लॉट को 2004 में इंटेल, डेल, IBM और HP वालों ने मुतारिफ करवाया। और PCI की अच्छी बात यह है कि PCI एक्सप्रेस PCI के साथ कंपैटिबल था। ग्राफिक कार्ड, SSD, वाईफाई, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और टीवी ट्यूनर के लिए इस्तेमाल होता था। PCI एक्सप्रेस ने AGP और PCI की जगह ले ली है और अभी भी इस्तेमाल में है। इसका स्पीड 32 GB तक है। थैंक यू वेरी मच।